Now children, let's do question number 14. The question says the difference of an integer a and minus 6 is 4. So here the difference is given and you have to find the value of a. Fine. Now here you don't have to assume let the other number be a or x because it's already given in the question. दो integers है, one is a and the other one is minus 6. ठीक है, so you'll directly write according to question. Since difference of two integers is given, so you are going to write a minus difference है, you put a minus sign. दूसरा इंटीजर लिखो minus 6. क्वेश्चन इज की जगह या टू गेट रहे या टू ऑब्टेन रहे इक्वल टू रहे उसके जगह हमेशा यू पुट अ equal to sign is 4. So according to question you have written this. Now minus into minus is plus. Now when this 6 will go this side, it is plus 6, so it's going to become minus 6. Now these are of one is a positive integer and the other one is a negative integer. Unlike signs है, so what you'll do, you'll find the difference. So 6 minus 4 हो जाएगा 2. Another thing which is greater, 4 और 6, 6 बड़ा है तो जो साइन 6 के पास है वो लिखो. And another thing that you always forget most of the time is you don't write this statement, children. If the question is written in complete statement, you have to give an answer at the end like this. Hence यहाँ क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सो यू विल राइट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू मत देना, यू विल राइट इज इंस्टेड ऑफ इक्वल टू. वॉट एवर द आंसर इज राइट दैट. Now follow question number 15. You have to write a pair of integers whose sum gives. कोई भी दो पेयर ऑपोजिट पेयर ले लो, +1 -1 ले लो तो जाहिर है 0 आएगा. You can take any number. One you will use a positive sign with that and the other one you will be using a negative sign. A negative integer, so you can take up any negative integer. One you have to take positive and the other one you have to take negative. For example, in your own book it's given 4 and -9. Why not -4 and +9? You will not take -4 and +9 because जो भी बड़ा होगा, the one who is having a greater value, साइन उसका आंसर में होगा, तो इसलिए +4 -9. जो भी दो इंटीजर्स लोगे you have to make sure that the one you are taking as negative integer, it should have a greater value. Now the third one, an integer smaller than both the integers. You can take any integer that is smaller than this. For example, 4 and -9 is here, so you can take a -3 and -5. Then an integer greater than both the integers, दोनों integers से बड़ा ले लो कोई, तो you take any two positive. Fine. Then an integer smaller than only one of the integers. किसी एक integer से छोटा हो, दूसरे से वो बड़ा होना चाहिए. So you can take the examples. Now these questions. The smallest integer is 0. Is it so? No, it is false. माइनस वाले जितने इंटीजर्स रहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स जितने रहते हैं वो छोटे रहते हैं. 0 स्मॉलेस्ट नहीं है. -10 इज ग्रेटर दैन -7. नो, रॉन्ग. हाउ रॉन्ग चिल्ड्रन? सी, यहाँ पे ये होगा नेगेटिव में जिसका वैल्यू जितना छोटा होगा, नेगेटिव में जिसका वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई write -5 for one of you and for somebody else I write -2. ज़्यादा मार्क्स किसको आएगा? सपोज़ 10 दो लोग को मिला था, एक को -5 कर दिए तो उसका मार्क्स 5 आएगा. दूसरे वाले को -2 करेंगे तो उसको मार्क्स 8 आएगा. तो 8 जिसको आया वो ज़्यादा हुआ. तो किसको 8 आया था? द वन फॉर whom I have done -2. ठीक है. तो नेगेटिव में जो इंटीजर जितना छोटा रहेगा दैट विल बी more greater. 0 is larger than every negative integer. Very true. 0 सारे negative integers से बड़ा होता है. The sum of two negative integers is a negative integer. Yes, very true. For example, -3 and -5, इन दोनों का आंसर क्या होगा? -8 हो जाएगा, right? If you add it. This is the closure property.
देन द सम ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये ज़रूरी तो नहीं है कि सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ऐड अगर करो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर तो सम हमेशा पॉजिटिव रहे। फाइन।